Hello friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. Currently we are discussing unit 1 of population and gender education, that is the population education and population dynamics, and we had discussed certain topics of it. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल दिए, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे जो कि आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्लूडिंग फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी एंड माइग्रेशन. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिए. पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 प्राइमरी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स इंक्लूडिंग फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी एंड माइग्रेशन. You know, जो population growth है, it means increase or decrease in the population, and this population growth depends on these 3 main factors. These are fertility, mortality and migration. So together ये जो factors है, they work as well as they also influence each other. Like for example, अगर fertility जो है when it increases, that means कि जो population growth है that also increases. And अगर mortality rate जो है when it decreases due to the better health care, that also means population also grows. And migration जो है, it simply means increase or decrease of population in a particular area. So together ये जो components हैं, these are called as the important components of the population change और important factors जो कि एक्सप्लेन करते हैं how population changes over time. and कोई भी चेंज जो है in population size उसको समझा जा सकता है by studying these 3 components. ठीक है. First of all, talking about the fertility or crude birth rate. Fertility जो है, it means the actual reproductive performance of a population. So it means कि जो actual number of children है, कितने actual number of children जो है they are born in a population, जिसमें mainly focus होता है on the live births rather than on pregnancies or potential births. And this shows how actively a population is reducing. And ये जो fertility है, this increases the population size because it adds new individuals. That is why ये जो fertility है, it is called as a positive force. And जब birth rate जो है, when this fertility is high, that means कि जो population है that grows rapidly. And there are certain factors जो कि affect करते हैं fertility को, including biological factors. Like अगर population जो है that has more women in the reproductive age group, usually between 15 and 49 years, then more children जो है in that area that are likely to be born. So similarly, if there are fewer women in this age group, that means कि जो fertility होगी वहाँ that will be lower. Similarly, there are there is other biological factor, that is the health and nutritional status. जो healthy और जो well nourished women होती है, they are more likely to give birth to the children. While जो poor health या जो malnutrition है, that can reduce the fertility and that can increase the complications in childbirth. इसके अलावा there are also social factors like age of marriage. बहुत सारी सोसाइटीज़ में जहाँ पीपल जो है दे मैरी एट एन अर्ली एज, वहाँ जो वुमेन्स होती है दे हैव ए लॉन्गर रिप्रोडक्टिव पीरियड. सो ये जो अर्ली एज है मैरी की, दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ हैविंग मोर चिल्ड्रन विच लीड्स टू दी हायर फर्टिलिटी. Similarly, religious and cultural beliefs जो है, this is another social factor.
कई कल्चर्स या जो रिलीजन्स हैं दे आल्सो एनकरेज हैविंग लार्जर फैमिलीज. सो एज वेल एज इन सम सोसाइटीज़ जो यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव्स इसको डिस्करेज किया जाता है, इसको स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. सो ये जो बिलीफ्स है सोशल एंड कल्चरल बिलीफ्स, these beliefs also lead to the higher population rates. Similarly, status of women. जब वुमेन जो है when they are educated, when they are working, such women tend to marry later and they prefer smaller families. Because educated women जो है they are more aware of family planning, they focus on career development which leads to the lower fertility. ठीक है. इसके अलावा there are also economic factors which include agricultural societies. Like if we talk about the farming societies, वहाँ जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है एज यूजफुल, बिकॉज जो चिल्ड्रंस होते हैं इन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ दे हेल्प देयर फैमिली इन एग्रीकल्चरल वर्क एंड दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर फैमिलीज इनकम. सो जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं दे प्रेफर टू हैव मोर चिल्ड्रन. While there are also industrial societies, like in modern industrial societies, जो चिल्ड्रन है रेजिंग चिल्ड्रन है इसको कंसिडर किया जाता है एज एक्सपेंसिव ड्यू टू देयर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लिविंग कास्ट्स. सो जो चिल्ड्रंस हैं इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ उनको देखा जाता है एज फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं सच societies prefer fewer children. ठीक है. I hope this is clear to you. Now second, talking about the mortality or crude birth rate. Mortality जो है it means the number of deaths that occur in a population over a period of time, जो कि शो करते हैं how many people are dying. And ये जो mortality है this reduces population because deaths जो है they remove individuals from the population. That's why ये जो mortality है it is a negative force. And there are various factors जो कि affect करते हैं mortality को, like public health and sanitation. जो access है to clean drinking water and proper waste disposal systems, this reduces the spread of diseases. And poor sanitation facilities जो है that lead to more diseases and higher death rates. Similarly, medical advancements, जो development है in vaccines, medicines या in modern medical treatment, this also reduces the number of deaths. That means it also increases the life expectancy, means जो people हैं they can now live longer. Then nutrition जो है it is a balanced diet, and balanced diet जो है it helps in maintaining the good health and strong immunity. And malnutrition जो है unbalanced diet जो है that weakens the body and increases the chances of disease and deaths, especially among children. Then environmental and disaster factors, like बहुत सारी natural disasters जो है like floods, earthquakes या droughts. These disasters can also cause sudden loss of life. Like if we talk about epidemics या pandemics, they also increase the death rate significantly. Then social stability, like in peaceful societies जो death rates होती है that are mainly lower. And in times of war and conflict जो mortality है that increases, especially among young men who are directly involved. ठीक है. I hope this is also clear to you. Now third, talking about the migration. Migration simply means movement of people across boundaries. So जो migration है it means जो people है they are moving from one place to another, either within a country or to another country to live there for a long or for a short time. And जब people जो है when they move from one place to another, जो population है एक region की that decreases.
while जो पॉपुलेशन है दूसरे रीजन की दैट इंक्रीजेस। हाउएवर जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की दैट रिमेन्स द सेम। एंड ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन हैज़ टू factors or two reasons, push and pull factors. Migration जो है it is driven by these two set of factors, because जो people है they move due to the certain reasons that either force them to leave or that attract them to new places. Like if we talk about push factors or reasons to leave, जो push factors हैं these are basically the negative conditions जो कि फोर्स करते हैं पीपल को टू मूव अवे फ्रॉम देयर करंट प्लेस। लाइक if we talk about the examples of push factors which include lack of job opportunities and poverty which makes survival difficult, या political instability की अगर हम बात करें, या war या persecution, these conditions also create unsafe conditions. Similarly natural disasters जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं होम्स या लाइवलीहुड्स को, या लैक ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स जो कि रिड्यूस करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ पुश फैक्टर्स. नाउ देयर आर ऑल्सो पुल फैक्टर्स और रीजंस टू अराइव. ये जो फैक्टर्स है दीज आर बेसिकली द पॉजिटिव कंडीशंस जो कि अट्रैक्ट करते हैं मोर पीपल को टू ए न्यू प्लेसेस. एंड दीज पुल फैक्टर्स आर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हायर इनकम, सेफ्टी, फ्रीडम और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, या फेवरेबल क्लाइमेट या फर्टाइल लैंड, या बेटर एजुकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ पुल फैक्टर्स. एंड इसके अलावा जो माइग्रेशन है इसके हमें मेनली टू टाइप्स देखने को मिलते हैं. इंटरनल माइग्रेशन. इंटरनल माइग्रेशन जो है इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन ए कंट्री सच एज फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. एंड ये जो इंटरनल माइग्रेशन है दिस लीड्स टू द अर्बनाइजेशन, दैट मीन्स द ग्रोथ ऑफ सिटीज. वाइल जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एंड जब पीपल जो है व्हेन दे एंटर ए न्यू कंट्री दिस इज कॉल्ड ए immigration, IMMIGRATION. And when they leave a country it is called the immigration, that is EMIGRATION. I hope this is also clear to you. And if we summarize जो fertility है, how this increases the population growth, that is जब birth rates है when that are high, जो that means कि जो population है that also increases. And however today जो fertility है it's now decreasing globally due to the education awareness or improved status of women. Then we had talked about the mortality which decreases the population size. Deaths जो है they mainly reduce the population, and this is also a decreasing today जो mortality है it is also decreasing due to the better health care which leads to the longer lifespans and aging populations. Then we talk about the migration redistribution जो कि redistribute जो कि change करते हैं where people can live. And migration जो है today it is also increasing globally due to the globalization as well as better opportunities. Now the question is why these three factors matter. These three factors है these three factors help us to understand the demographic transition. Like by studying fertility, mortality and migration हम समझ सकते हैं how population changes as a country develops. Like in earlier stages अगर हम ट्रेडिशनल पीरियड की बात करें उस समय जो बर्थ रेट्स थी या जो डेथ रेट्स थी वो बहुत ही हाई थी. सो उस समय जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी दैट वाज स्लो. देन उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेज आया, मिडल स्टेज आया, उस समय जो डेथ रेट्स थी दैट स्टार्टेड टू फॉल, बट एट द सेम जो बर्थ रेट्स थी दैट रिमेन हाई विच एट दैट टाइम लीड्स टू द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ. देन उसके बाद टुडे मॉडर्न स्टेज हमें देखने को मिलता है जिसमें हमें बोथ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स जो है वो हमें लो देखने को मिलते हैं विच लीड्स टू द स्टेबल
population. ठीक है? I hope it is also clear to you. Now at conclusion, we had learned that कि ये जो 3 factors है, these 3 factors play a very important role in controlling the population growth. We had discussed जो fertility है, it adds the people, mortality जो है it reduces the people, and migration जो है it changes where people can live. And together ये जो 3 important factors है, they determine the size, structure and growth of population in a world. So guys, that's it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe Discipline Talk channel. Thank you for watching.